Okay, so amine inversion. Amine inversion is also called flipping of nitrogen. What happens here is called flipping of nitrogen. So if there is an amine having different groups, the nitrogen inversion refers to the phenomenon of interconversion of the amine between its two enantiomeric forms. Now, what is the meaning of this? Let's understand. Okay, look at this particular amine. Okay. So I draw you. So let's say I have this amine. So this is the amine, and there's a lone pair on this nitrogen atom. Okay, so this amine has different groups patched, all are different groups. Since it has all different groups, we expect it to be chiral. That means we expect that this will be optically active. Since it has all different groups, we expect it to be optically active. But what happens is this amine does not exist in this form. That means it is not always an isolated amine. That means it is not alone. Why is it not alone? It is not alone because it has a tendency to convert. It has a tendency to convert into this format. This format. So this is the tendency. And hence the lone pair becomes downward. So this amine has a tendency to convert to the other form, and also I can say this has a tendency to convert to this form. This happens very fast. This interconversion keeps happening rapidly, that is very fast. This form to that form to this form, this form to that form to this form. So the interconversion is extremely fast and it happens at room temperature. Now, if you focus on this, you will see that if I call this A and this B, so basically A and B are enantiomers of each other. A and B are enantiomers of each other. Since both these enantiomers always exist together, hence the mixture consists of both A and B, and we cannot isolate A from B. Also, we cannot isolate B from A. So this means at room temperature, by default, the amine will exist in both its forms in equal amounts. Both A and B coexist at the same time. So this process is automatic. There is experimental evidence behind this, and so we came to a conclusion that this is happening very fast and it is happening at room temperature. So nobody can stop this conversion. As a result of this particular phenomenon, both A and B coexist. Both A and B coexist.
That means they exist together at the same time. And hence I say that the amine is existing in the form of a racemic mixture. So I can say that the amine is existing in the form of a racemic mixture. What is the meaning of racemic mixture? Both the enantiomers are present in the same mixture at the same time in equal amount. And we know that a racemic mixture is optically inactive. A racemic mixture is optically inactive. So this mixture is also optically inactive because the mixture consists of both A as well as B. And hence, if they just ask you, what about this molecule? What about this molecule? Is this optically active or optically inactive? Then we will have to say that this is optically inactive. Why? Because it exists in the form of a racemic mixture. तो नहीं तो क्या होगा? अगर आपको ये पता नहीं तो आप बोल दोगे कि हाँ तीनों के तीनों अलग ग्रुप्स है, तो ये होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल हो गया, नाइट्रोजन एटम तो कायरल हो गया, इसके लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये और साथ ही साथ इसका इनैक्शियोमर दोनों हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ये एग्जिस्टेंस दोनों का जो एग्जिस्टेंस है साइमल्टेनियसली वो आप रोक नहीं सकते, वो होता ही जाएगा। एंड दैट इज व्हाई बोथ द इनैक्शियोमर्स एग्जिस्ट टुगेदर एट द सेम टाइम एट रूम टेम्परेचर। So the overall mixture is optically inactive, which means that इसका कोई independent existence नहीं है, हमेशा ये और इसका enantiomer एक साथ exist करते हैं, so they cannot be isolated from each other, so they are always existing together, and hence the mixture is optically inactive. इस phenomenon को बोलते हैं amine inversion. क्यों inversion? Because एक अपने आप कन्वर्ट हो जाता है दूसरे में और दूसरा भी अपने आप कन्वर्ट हो जाता है पहले वाले में, इसके लिए इसको बोलते हैं अमाइन इन्वर्जन, आल्सो कॉल्ड फ्लिपिंग ऑफ नाइट्रोजन। So let's come to the theory now. So in case of an amine having different groups, nitrogen inversion refers to the phenomenon of interconversion of the amine having a chiral nitrogen between its two enantiomeric forms. दोनों enantiomeric forms होते हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। This conversion occurs very rapidly and at room temperature. Hence, the amine always exists as a racemic mixture. As a result, the amine is optically inactive. So now you can write down this. लिख लो ये पूरा लिख लो।
ओके, यहाँ तक लिख के हो गया. Yes, sir. Okay, keep writing. Finish the sentence. सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए ना. Hmm. थैंक यू सर. आप सर बस एक लाइन ऊपर कीजिए ना. Hmm. Okay. हो गया यहाँ तक. Yes, sir.
तो जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही है यहाँ पे कि ये जो इनैंशियोमर से ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं सेम टाइम पे एट रूम टेम्परेचर एंड these two are enantiomers of each other. Since both exist in same quantity, we say that the mixture is a racemic mixture. तो क्या होता है ओवरऑल फिर ये मिक्सचर की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. इसके लिए देखो कैपिटल में लिखा है, अपर केस में लिख के दिया है कि दे हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. मतलब एक अकेला नहीं है, दोनों एक साथ हैं. इसके लिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है किसी का. तो ये एग्जांपल दिया है इस वाले अमाइन का. वैसे कोई भी आप अमाइन का एग्जांपल ले सकते हो. तो कहने का मतलब क्या है, ये नाइट्रोजन है तो कायरल, बट कायरल होने के बावजूद भी ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है बिकॉज ऑफ रेसमिक मिक्सचर. ये नोट के पॉइंट्स भी लिख लो. इसको अम्ब्रेला इफेक्ट या अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं. अब ये जो कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आता है. ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेट जो कुछ पल के लिए एग्जिस्ट करता है. तो वो ट्रांजिशन स्टेट जो होता है, वो ट्रांजिशन स्टेट में ये मॉलिक्यूल प्लेनर होता है और नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. तो अगर किसी ने पूछा कि इसका ट्रांजिशन स्टेट क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ट्रांजिशन स्टेट में ये प्लेनर होता है और इसका नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है. व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है कि जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो बीच में कुछ पल के लिए जो एग्जिस्ट करता है जो स्टेट, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट. And during this transition state, where is the lone pair of nitrogen? The lone pair occupies a pure p orbital. The lone pair occupies a pure p orbital. p orbital के अंदर चला जाता है lone pair transition state में. ओके डन, यहाँ तक लिख के पूरा. Yes, sir. ओके ओके. तो अभी किसमें है,
ये लोन पेयर अभी कौन से ऑर्बिटल में है? शुरुआत में ऐसा है, एंड में ऐसा है, लेकिन बीच में है वो ट्रांजिशन स्टेट है, राइट? तो अभी जो शुरुआत है उसमें किस में है ये? इस फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है तब किस ऑर्बिटल में इसका लोन पेयर है? This lone pair is occupying which orbital of nitrogen? Yes, कौन से ऑर्बिटल में है ये? फिलहाल किसमें है? What is the hybridization of this nitrogen atom? Yes, what is the hybridization of this nitrogen atom? One sigma bond, two sigma bonds, three sigma bonds, and one lone pair. So what is the hybridization? Three sigma bonds and one lone pair, ना? So sp3 is the hybridization. तो ये लोन पेयर भी sp3 में ही है. जब ट्रांजिशन स्टेट आता है तब ऐसा हो जाता है. This is called a transition state. और तभी एक प्योर p ऑर्बिटल जो रहता है यहाँ पे लोन पेयर चला जाता है. So this is called the transition state. And here नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2. So this is the transition state, and then again this converts to the other enantiomer. तो क्या हो जाता है अभी वापस ऐसा हो जाता है. Now again this is sp3 and this is again sp3. तो ट्रांजिशन स्टेट में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और लोन पेयर का लोकेशन होता है प्योर p ऑर्बिटल में. तो ये जो कन्वर्जन है ये पूरा इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन ऑफ अमाइन. Fine? Okay. So due to inversion, the amine becomes optically inactive. ये आपको याद रखना पड़ेगा. Due to inversion, the amine becomes optically inactive. Ultimate takeaway is this. Okay. Now we have done
geometrical isomerism, we have done optical isomerism. Now we'll come to conformational isomerism. So what is this conformational isomerism? So this is the last part of isomerism. Okay. See now, conformational isomerism is the isomerism which arises as a result of rotation about a sigma bond. We all know that a sigma bond is free. That means about that sigma bond, there is no restriction about rotation. There is no hindrance to rotation, which means around the sigma bond, rotation is free. It is possible. So if I have a bond, which is a sigma bond like this, so between these two atoms, this sigma bond is free to rotate. फ्री टू रोटेट का मतलब क्या है? अगर ये बॉन्ड रोटेट हो सकता है तो फिर इसके इस एटम के साथ जो ग्रुप्स अटैच्ड है वो भी रोटेट हो सकते हैं. मतलब the moment you try to rotate this bond, automatically arrangement of atoms will also change. Right. तो arrangement of atoms बदल जाता है. तो ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की वजह से अगर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज अकरिंग. So what is conformation isomerism? When we can draw different arrangements of a molecule after rotation about a sigma bond, then we get conformational isomers. Okay. तो एक सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेट करके आपको अलग अलग अरेंजमेंट्स मिल सकते हैं. तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं इस तरीके का, यहाँ पे आपके एटम से ऐसा है मान, okay. ऐसा है, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं. ये कार्बन एटम से मान, these two are carbon atoms, and around this sigma bond I can rotate. So rotation with respect to this sigma bond will give rise to different arrangements of the molecule, right? So those different arrangements which will be possible will be called conformational isomers or conformers. अभी एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं इसको रोटेट करूं कुछ एंगल से, I can rotate this by 1 degree. If I rotate by 1 degree, I'll get some arrangement. If I rotate by 2 degrees, I'll get another arrangement. I may rotate by 3 degrees, I'll get another arrangement. तो मैं अलग अलग angles के हिसाब से rotate कर सकता हूँ. I can rotate this by different angles. Every different arrangement will be called a new conformational isomer. इसका मतलब अलग अलग ऐसे अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे अगर मैं अलग अलग एंगल्स के अबाउट घुमाऊं तो 2 degrees, 3 degrees, 4 degrees, 60 degrees, 120 degrees, ऐसे मैं घुमा सकता हूं. So can you tell me how many conformers are possible for a molecule? If I rotate, if I cause rotation about the sigma bond by different degrees, then how many possible isomers are there for a particular molecule? How do I find out that? So infinite. Exactly. How infinite? So we have Yes, tell me, how infinite? Answer is correct. so for every degree we have a different isomer, so that's why. Yes, for every degree you have a different arrangement. So infinite एंगल ऐसे कुछ नहीं है ना कि 1 से 360 है, ऐसा तो नहीं है. 1 के बीच में 1 और 2 के बीच में 1.5 डिग्रीज भी है, 2 और 3 के बीच में 2.2 डिग्रीज भी है. तो ऐसे आप गिन थोड़ी सकते हो कि कितने डिग्रीज में घुमाऊंगा, कुछ भी हो सकता है ना. That is why we say infinite. Hence infinite conformers are possible for a molecule. Right. तो ये पहली चीज थी. तो हम लोग तो इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स को देख के पढ़ाई नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कन्फॉर्मर्स को देखेंगे. मेजर 2 टाइप्स के कन्फॉर्मर्स को हम लोग देखेंगे. बट उसके पहले आप ये लिख लो,
Please start writing this and then I'll go ahead. Okay, done, यहाँ तक? Keep writing this theory part.
डन यहाँ तक लिख के? Yes, sir. Okay. So as I said, we cannot study infinite conformers. So what we will study are two major conformers. So two major conformers that we will look at are eclipsed and staggered. Eclipsed and staggered. These are the two conformers that we will look at. All right. अब तरीका देखते हैं रिप्रेजेंट करने का एक्लिप्स फॉर्म को। अब ध्यान से देखो, एक्लिप्स फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। अगर मैं बोलूं कि एक्लिप्स फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है, तो एक्लिप्स फॉर्म का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। ये जो दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन एटम है, यहाँ पे भी कार्बन एटम है, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे मानो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी एफ। तो सिंप्लिसिटी के लिए क्या है, जस्ट रिमेंबर लाइक दिस, अगर दो y है, क्या है y, इंग्लिश में y कैसा होता है, ये होता है y ना। तो जो y है, अगर दोनों ही y है तो उसका बोलेंगे एक्लिप्स फॉर्म। अब वो y ऐसा भी हो सकता है या फिर वो y उल्टा भी हो सकता है, इन्वर्टेड y मानो ऐसा है, तो भी ये भी एक्लिप्स्ड ही है। तो ये भी एक्लिप्स्ड है, ये भी एक्लिप्स्ड है। अगर दोनों के दोनों y's दिख रहे हैं तो वो क्या है, एक्लिप्स्ड। ओके। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको y इस तरीके से दिखे, जैसे मानो ऐसा, ऐसा और ऐसा, तो ये भी y, ये भी y, तो अभी भी एक्लिप्स ही कहलाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मुझे वापस दिखाना है ऐसे ही दो उल्टे वाइस, ये तो सीधे वाइस थे, अब जो उल्टे वाई अगर दिखाने हैं तो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बस उल्टा कर दो, वाई को इन्वर्ट कर दो, इन्वर्ट कर दिया, कर दिया इन्वर्ट, तो ये भी आपका बन गया एक्लिप्स्ड, ये भी एक्लिप्स्ड, ये भी एक्लिप्स्ड। तो ये तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। और क्या, और भी एक तरीका होता है, जैसे देखो अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, here I am showing the sigma bond between the two atoms, right? Here I am showing the sigma bond between the two atoms. There is another way where I don't show the sigma bond between the two atoms. तो उसको फिर ऐसे करते हैं, ये वाला जो है ना पीछे की तरफ, और इसको बोलते हैं आगे की तरफ कार्बन, फ्रंट कार्बन एंड रेयर कार्बन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट कार्बन, फ्रंट, और इसको क्या बोलते हैं, रेयर कार्बन और बैक कार्बन। तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रंट वाले को छोटे सर्कल से, तो ये हो गया फ्रंट, राइट, और जो पीछे का कार्बन है उसको बड़े सर्कल से। ये बस नोटेशन है और कुछ नहीं, नोटेशन है ये समझाने के लिए कि जो बड़ा सर्कल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कार्बन व्हिच इज बिहाइंड। तो अगर मैं बड़ा कार्बन को दिखाऊं, बड़ा सर्कल दिखाऊं, मतलब वो पीछे का कार्बन है, तो वापस मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, करेक्ट। तो ये भी तरीका है, वो भी तरीका है, दोनों ही तरीके हैं, तो आपको दोनों आने चाहिए।
ठीक है, तो दोनों y या फिर दोनों इन्वर्टेड y, अब मानो इन्वर्टेड y करना है तो क्या करेंगे, पहला वाला कार्बन जो सामने की तरफ है वहां से इन्वर्टेड y, पीछे का कार्बन ऐसा वहां से भी इन्वर्टेड y। ओके, ये भी हो गया एक्लिप्स फॉर्म, क्योंकि ये भी सामने का भी y पीछे का भी इन्वर्टेड y। ये सामने वाला कार्बन ये बड़ा वाला सर्कल रिप्रेजेंट करता है पीछे वाले कार्बन को। So all these are different versions of representing eclipsed conformation। तो वही यहाँ पे बोला गया है, eclipsed form is represented as this। eclipsed का मतलब क्या है, दोनों y या दोनों inverted y। Okay? अगर एक y है और दूसरा इन्वर्टेड y है तो क्या करेंगे, तो उसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखो, एक y दूसरा इन्वर्टेड y, उसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। यहाँ पे भी वही है, एक y पीछे इन्वर्टेड y, तो वो क्या, स्टैगर्ड। तो अभी आप लिख लो एक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म के representations। If you have any doubt, please ask now। ओके, हो गया ड्रॉ करके एक्लिप्स फॉर्म सबका। एक्लिप्स फॉर्म हो गया। ओके, नाउ ड्रॉ स्टैगर्ड फॉर्म। अगर ऐसा है तो क्या फॉर्म है, क्या है ये अभी जो बनाया मैंने, एक्लिप्स या स्टैगर्ड? व्हाट इज दिस फॉर्म, एक्लिप्स और स्टैगर्ड? हाँ, क्या है ये, एक्लिप्स या स्टैगर्ड? So staggered. क्या है, स्टैगर्ड है, एक इन्वर्टेड y है और दूसरा y है, तो हो गया स्टैगर्ड। फाइन, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पे। रिपल्शंस की बात करते हैं कि क्या क्या रिपल्शंस हो सकते हैं। अब देखो, सिंपल सी चीज है, अगर आप इस पे फोकस करोगे या फिर आप इस पे फोकस करोगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा कि रिपल्शंस नामक चीज क्या होती है। रिपल्शन का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में रिपल्शन, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी।
अब मैं अगर बोलूं, अब ध्यान से देखो मैं क्या लिखा रहा हूं, ये जो बॉन्ड है ना यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड, so a bond means what? Bond means electrons. Bond has electrons and electrons are negatively charged. और इसके पीछे भी है आपका ये वाला बॉन्ड। तो दो बॉन्ड्स जो मैंने दिखाए हैं एक पीछे दूसरे के पीछे, मतलब ये एग्जैक्टली इसके पीछे है ना, तो अगर एक दूसरे के पीछे है बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड्स आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, अगर पास पास आ रहे हैं दो बॉन्ड्स तो ऑब्वियसली कुछ रिपल्शंस होंगे, बिकॉज बॉन्ड्स आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। दो जब नेगेटिवली चार्ज चीजें या तीन नेगेटिवली चार्ज चीजें या चार नेगेटिवली चार्ज चीजें अगर बहुत पास में लाई करेंगी तो ऑब्वियसली उनके बीच में रिपल्शन होगा, सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर। तो ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो आप पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग में, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होते हैं वो क्यों होते हैं? वो इनकी वजह से ही होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होते हैं। तो ऐसे ही एक्लिप्स फॉर्म में अगर आप देखोगे तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं क्योंकि एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे है। करेक्ट। तो ये डिस्टेंस दोनों के बीच में कम है, सो ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर आसपास है तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वह एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ऐसे रिपल्शंस, बॉन्ड पेयर रिपल्शंस जो यहाँ पे अराइज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? Torsional strain. What is torsional strain? Torsional strain arises due to the repulsion between pairs of bonds. So bond pair repulsion बोल सकते हैं उनको, caused by the electrostatic repulsion of the electrons in the bonds. Electrons जो bonds में है वो अगर पास में है एक दूसरे के आजू बाजू में तो वो रिपेल करते हैं, because electrons are negatively charged, and so we say that torsional strain is that particular strain which arises due to repulsions between bond pairs. तो टॉर्शनल स्ट्रेन को डेफिनेशन ये होता है कि टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है, जो बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शंस होते हैं उनको बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। सो राइट डाउन। So torsional strain arises due to repulsion between pairs of bonds caused by the repulsion of electrons. मतलब क्या? अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के बीच के रिपल्शन की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग टॉर्शनल स्ट्रेन। Compare the eclipsed form and staggered form and tell me कहाँ पे torsional strain ज्यादा है, eclipsed form में कि staggered form में? Eclipse. Why? कहाँ पे torsional strain ज्यादा है?
सर एक्लिप्स में एक ही लाइन में ओरिएंटेड है। सर मतलब ये प्रूव करेंगे। हाँ एक दूसरे के पीछे है ना, इसके पीछे दूसरा, तो रिपल्शन ज्यादा होंगे। तो इसके लिए बोलते हैं कि एक्लिप्स में स्टैटिक स्ट्रेन टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा है। ये देख लो ना, यहाँ पे देखो बी और ई, और यहाँ पे देखो आप बी और ई, कहाँ बी है और कहाँ ई है, और यहाँ बी और इतने पास पास है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड्स में, बी वाले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स और ई के इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। तो बॉन्ड पे रिपल्शंस आर मोर इन केस ऑफ एक्लिप्स्ड कन्फर्मर। स्टैगर्ड में इतना नहीं है, तो स्टैगर्ड में रिपल्शंस कम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर है, उनके बीच में जगह ज्यादा है। तो टॉर्शनल स्ट्रेन कम हो जाता है स्टैगर्ड में, लेकिन टॉर्शनल स्ट्रेन एक्लिप्स में थोड़ा ज्यादा रहता है। So this is the first type of strain. Second type of strain is what? The second type of strain is static strain. ये होता है static strain. सर टॉर्शनल स्ट्रेन एक बार दिखाएंगे। Torsional strain. थोड़ा सा नीचे आइए। हो गया। All right. Let's come to static strain. अब static strain क्या होता है? Static strain arises due to repulsion between two atoms or groups as a result of small distance between the two atoms or groups. मतलब क्या? अगर मैं बोलूं कि ये B और ये F, अब B और F जो है ये दोनों के बीच में स्पेस है, काफी काफी स्पेस है। तो ऐसा जितना स्पेस ज्यादा रहेगा उतना रिपल्शन बी और एफ के बीच में कम। दो चीजें बहुत नजदीक हो जाती है तो क्या होता है, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। दैट इज व्हाई वी सी दैट देयर इज स्टैटिक स्ट्रेन। स्टैटिक स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा क्राउडिंग की वजह से होता है। क्राउडिंग मतलब भीड़, मतलब क्या, आसपास है एटम्स, बहुत ज्यादा नजदीक है, तो वो दो एटम्स के बीच में जो रिपल्शन है उसको बोलते हैं हम लोग क्राउडिंग। क्राउडिंग की वजह से रिपल्शन जो होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेन। तो वैसे ही अगर मैं बोलूं कि बी और एफ के बीच में डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, वैसे बी और ई के बीच में भी डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। करेक्ट, बी और डी के बीच में भी डिस्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू द डिस्टेंसेस इन एक्लिप्स। अब एक्लिप्स में क्या है, बी और ई, बी और ई एग्जैक्टली क्या है, लाइंड अप है। लाइंड अप का मतलब क्या, बी के पीछे ई, एग्जैक्टली बी के पीछे ई है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बी और ई दूर है। सो अगर दो एटम्स या दो ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, और दो एटम्स के बीच में अगर डिस्टेंस बहुत कम है, यानी वो दो बहुत नजदीक है, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, तो फिर स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा होगा। तो स्टेरिक स्ट्रेन को मतलब डिस्टेंस से हम लोग कर सकते हैं कोरिलेट, कि अगर दो एटम्स या दो ग्रुप्स एक दूसरे को धक्का मारते हैं, यानी बहुत नजदीक है एक दूसरे के, देन द स्टेरिक हिंड्रेंस इज गोइंग टू बी मच मोर। एंड स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने का मतलब क्या है, रिपल्शन वहां पे ज्यादा हो रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल को स्टेबल कम बना रहे हैं, मतलब उसको अनस्टेबल बना रहे हैं ज्यादा, राइट। सो इसका मतलब ये है कि आपको अगर स्ट्रेन मिनिमाइज करना है तो टॉर्शनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन दोनों मिनिमाइज करने के लिए, दोनों अगर मिनिमाइज कर सकते हैं तो ही स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी हाई। यानी अगर स्ट्रेन कम होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेस द स्ट्रेन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल।
राइट। तो वही बात है कि जो टॉर्शनल स्ट्रेन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन होता है, और जो स्टेरिक स्ट्रेन होता है वो दो एटम्स या दो ग्रुप्स के बीच के रिपल्शन की वजह से होता है। तो अगर धक्का मारेंगे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को, है ना, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को अगर धक्का मार रहा है तो उसका मतलब कौन सा स्ट्रेन आएगा? उसका मतलब आएगा स्टेरिक स्ट्रेन। ओके, तो स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा कहां पे होगा? जहां पे एटम्स या ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। तो भाई ये यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन का डेफिनेशन लिख लो। स्टेरिक स्ट्रेन ओके डन, यहाँ तक लिख के। हो गया लिख के यहाँ पे। फिनिश राइटिंग। हो गया लिख के। Finish writing this static strain. Okay. Now next, सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है? तो जब हम लोग कन्फर्मर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? There are two techniques that we use. One is सॉहर्स and one is न्यूमैन। तो पहले सॉहर्स की तरफ देखते हैं। पहले भी अब मैंने आपको दिखाए थे ये वाले तरीके। तो ये जब आप दिखाते हो ना दो कार्बन एटम्स के बीच का सिग्मा बॉन्ड, तो उसको बोलते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? You show the sigma bond across which you are rotating। तो दो कार्बन एटम्स के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है उसके अक्रॉस रोटेशन हो रहा है और वो आप दिखा रहे हो सिग्मा बॉन्ड। तो ये
चार के चार फॉर्म्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं ऑल आर सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन के एग्जांपल्स. Now tell me, first one जो मैंने ड्रॉ किया है, what is it? Eclipsed or staggered? Eclipse. Yes, because both are vials. So first one is eclipsed. Okay, what about the second one? Staggered. Yes. Second one is staggered. Third one. Eclipse. Again, third one will be eclipsed because दोनों के दोनों उल्टे Y हैं, inverted Y shaped के. And fourth one. Staggered. So all these four are examples of sawhorse projection. Sawhorse. तो ऐसे आप जब रिप्रेजेंट करते हो उसको बोलते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन. राइट डाउन सॉहर्स प्रोजेक्शन के ये चारों के चारों एग्जांपल्स. राइट डाउन. वैसे ही हम लोग दिखा सकते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन. आप खुद कोशिश करो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन चार्ट ड्रॉ करने की, उसके बाद मैं दिखाऊंगा. सॉहर्ट्ज को देख के आप कोशिश करो इन्हीं चार को न्यूमैन में बदलने की. कैसे करोगे? ये जो पीछे वाला कार्बन है इसको हमेशा बड़ा सर्कल से रिप्रेजेंट करना और ये सामने वाला कार्बन जो इसको छोटे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे. So try to convert these four to Newman projection.
ओके, सो लेट्स सी कन्वर्जन कैसे करना है। फर्स्ट वन क्या करेंगे, चेक करो, बड़ा वाला सर्कल विल बी दिस वन एंड दिस विल बी द छोटा वाला सर्कल, दोनों वाइज है, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। So the small dot represents the front carbon and the big circle represents the back carbon. तो इस तरीके से दिखा सकते हैं हम लोग। एक्चुअली बी के एग्जैक्टली पीछे ई है, सी के एग्जैक्टली पीछे एफ है और ए के एग्जैक्टली पीछे डी है, बट वो दिखाना मुश्किल है, इसके लिए थोड़ा सा उसको टिल्ट करके दिखाया है। एक्चुअली ए के पीछे डी है ना, तो वो दिखाओगे कैसे, इसके लिए ऐसे ए और ऐसे यहाँ पे डी दिखाया है, जबकि ये एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे ही, मतलब ए के पीछे डी है। ओके, सो दिस इज व्हाट एक्लिप्स। सेकंड वाला देखो, अभी सेकंड वाला देखो क्या है, स्टैगर्ड है, ये बड़ा सर्कल, ये छोटा सर्कल, तो वही है, तो दिस इज स्टैगर्ड। थर्ड वन एक्लिप्स्ड, बोथ आर इन्वर्टेड वाइज, ये बड़ा सर्कल होगा और ये छोटा सर्कल, छोटा डॉट, ये हो जाएगा थर्ड वाला। वापस वही है, सी के एग्जैक्टली पीछे एफ है, ए के एग्जैक्टली पीछे डी है और बी के पीछे ई है। So this again is eclipsed. Coming to that one, fourth one staggered है, ये बड़ा वाला सर्कल हो जाएगा और ये छोटा वाला, कैसा हो जाएगा, तो the above structures are examples of Newman projection। ये चारों के चारों ड्रॉ किए यहाँ पे, ये क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। Okay, now next let's see how to convert Sahars to Fisher। तो उसके लिए क्या है तरीका, let us consider this example of Sahars projection। I want to convert this Sahars to Fisher, तो कैसे करेंगे देखो, अभी फिशर के लिए ड्रॉ करेंगे ऐसे लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, तो ये हो जाएगा फिशर प्रोजेक्शन। अब क्या है, फर्स्ट थिंग इज टू चेक वेदर बोथ आर वाइज और नॉट। यहाँ पे एक चीज याद रखो, अगर आप फिशर में कन्वर्ट कर रहे हो, फिशर में कन्वर्ट करने से पहले आपको पहले दोनों के दोनों वाई फॉर्म में लाना पड़ेगा, बोथ शुड बी इन द फॉर्म ऑफ वाई, ये भी वाई होना चाहिए, ये भी वाई होना चाहिए, अगर नहीं है तो देखेंगे क्या करना है, लेकिन अभी तो है इसमें दोनों के दोनों वाई, एंड नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस टू फिशर फॉर्म। कैसे करेंगे देखो, ये जो है ना पीछे वाला, ये है ये वाला, तो जो पीछे वाला कार्बन है सॉहर्स में, फिशर में वो सबसे ऊपर रहता है, फिशर में वो सबसे ऊपर रहता है, और एफ वर्टिकल है तो यहाँ पे पहले एफ लगा देंगे, डी इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड सो डी इधर, ई इज ऑन राइट हैंड साइड सो ई इधर।
फिर ये वापस सी वर्टिकल लाइन पे, यहाँ पे वर्टिकल पे लगा तो सी, ए लेफ्ट हैंड साइड पे है और बी राइट हैंड साइड पे, ये आपका बन गया फिशर प्रोजेक्शन. So this can be converted to Fisher like this. Okay, any doubt? Just check and tell me. ओके, तो इसके लिए यहाँ पे दिखा दिया मैंने कन्वर्ट करके. अगला वाला चेक करते हैं. नाउ इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस टू फिशर देन व्हाट टू डू. ना अच्छे से देखो, इसमें इश्यू क्या है. इसमें इश्यू ये है कि हमारे पास दो y नहीं है, हमारे पास क्या है, एक y और एक इन्वर्टेड y. तो ऐसे केस में क्या करना है. ऐसे केस में सबसे पहले दो y लाना है. तो कैसे लाएंगे दो y. देखो ये तो ठीक है, ये तो ऑलरेडी y के फॉर्म में है ए बी और सी. अब इसको हम लोग को y में लाना है. ओके, तो उसके लिए तरीका बहुत सिंपल है. क्या है, हर बॉन्ड को एक्सटेंड कर दो अपोजिट साइड में. तो इसको अगर एक्सटेंड कर दिया मैंने अपोजिट साइड पे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे R. अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया अपोजिट साइड पे तो क्या मिल जाएगा मुझे, P. और इसको एक्सटेंड कर दिया अपोजिट साइड पे तो क्या मिल जाएगा, Q. So just I have extended each bond in the opposite direction. बन गया y अभी, तो ये P और R अभी बन गया. ये दोनों के दोनों y's हो गए. अब दोनों के दोनों y हो गए. Now we can convert to Fisher. करेक्ट. तो ये पीछे वाला कार्बन यहाँ पे लगा देंगे R, यहाँ पे P, यहाँ पे Q. यहाँ पे C वर्टिकल लाइन, यहाँ पे A, यहाँ पे B. बन गया फिशर प्रोजेक्शन इसका. तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट किया और उसके बाद फिशर में. So keep this in mind. If you want to convert a Sauer's projection to Fisher projection, ensure that first you have both y's in the Sauer's projection. दोनों के दोनों y फॉर्म में होने चाहिए. Okay, then only you can convert. Yes, any doubt? वही यहाँ पे बताया गया है कि पहले इसको ऐसे कन्वर्ट करो दोनों y में और फिर इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फिशर में. All right. Conversion of Newman projection to Fisher projection. Sauer's to Fisher देख लिया हम लोगों ने. वहाँ पे Sauer's to Fisher किया था. अब Sauer's to Fisher करने के बाद न्यूमैन टू फिशर देख लेते हैं. Let us consider the following example. First, ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन.
तो वापस आसान हो गया, दोनों के दोनों y फॉर्म में है, तो फाइन वी कैन कन्वर्ट इट टू फिशर। दोनों y फॉर्म में होने चाहिए तो ही हम लोग फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होता है बड़ा वाला सर्कल, यानी पीछे वाला कार्बन। पीछे वाला कार्बन में क्या क्या लगा है, लेफ्ट हैंड साइड पे डी लगा है, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में ही डी लगेगा, और यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ, ऐसा हो जाएगा। एंड सामने वाले कार्बन में क्या क्या लगे हैं, ए लेफ्ट हैंड साइड पे है, बी राइट हैंड साइड पे है, और सी है। So this is going to be the Fisher projection for the first one. सर हम इससे पहले सॉहर्स में कन्वर्ट करके फिर फिशर में कर भी वो भी कर हाँ, सकते वो भी कर सकते हो, बट वाई टू इंक्रीज योर स्टेप्स? दिख ही रहा है ना, सीधे सीधे 2 वाई है। हाँ सर। ओके, देन दिस वन। अब इसका क्या इशू आएगा, इसमें 2 वाइज नहीं है, तो पहले 2 वाइज बना लेते हैं। सर थोड़ा सा प्रोडक्ट दीजिए। हाँ, पहले ये कर लेते हैं। 2 वाइज में पहला वाई ऑलरेडी है, ये ABC वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे वाला जो कार्बन है उसमें वाई नहीं है, तो उसमें पहले वाई बना लेंगे। कैसे वाई बना लेंगे, अगेन सेम थिंग, एक्सटेंड ईच बॉन्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। चलो इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे P आ जाएगा, इसको एक्सटेंड किया यहाँ पे, तो यहाँ पे Q आ जाएगा, और इसको एक्सटेंड किया यहाँ पे, तो R आ जाएगा। राइट, चलो यहाँ पे लिख देंगे P, यहाँ पे R, और यहाँ पे Q। Now we can convert this to Fisher. बड़ा वाला कार्बन है ये, तो यहाँ पे P, ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमेशा 2 वाई के फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन कन्वर्ट टू फिशर। चाहे वो सॉहर्स हो या न्यूमैन हो, 2 वाइज होने चाहिए पहले, दैट्स द फर्स्ट थिंग। डन लिख के यहाँ तक। डन सर। ओके, तो वही यहाँ पे किया है, एंड देन कन्वर्ट किया इसको फिशर में। ओके, तो कन्वर्जन आना चाहिए अच्छे से। नाउ सी, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल देखते हैं, इथेन। दिस इज इथेन, इसको बोलते हैं इथेन। 2 कार्बन एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है क्लियरली सबको। अब यहाँ पे इसके अराउंड रोटेशन करके मैं अलग अलग कन्फॉर्मर्स निकाल सकता हूँ। कैसे, पहले ऐसे, करेक्ट,
This could be one conformer. Similarly, this could be another conformer. करेक्ट, ऐसे अलग अलग कन्फर्मर्स आ सकते हैं। या फिर so these are the conformer, these are the two carbon atoms। तो इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर करके अलग अलग कन्फर्मर्स हम लोग कर सकते हैं। करेक्ट। So now I'll show you one video so that you get an exposure or the feel of how it looks। तो इथेन के प्रोजेक्शन ये क्या बोलते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शंस दिखा रहा हूँ। जस्ट सी दैट वीडियो। Represent those different conformations using a type of drawing called a Newman projection. So here I have a molecular model of ethane, got 2 carbons, it's very saturated with hydrogens. What we're going to focus on in these conformations of ethane is this carbon-carbon bond. This is a sigma bond and it has free rotation. And so we can imagine there's lots of different possible three-dimensional arrangements of these atoms in space. And these different arrangements or conformations may have different stabilities and energies associated with them. Okay, the most helpful way to look at this model, if we're trying to visualize these different conformations, is to line up our line of sight with the carbon-carbon bond. Okay, so we're going to look down the carbon-1, carbon-2 bond and try to line it up with our sight. And then if we rotate that sigma bond, we can tell the hydrogens are arranged in three-dimensional space relative to each other. Okay, so before I talk about the different stabilities of these different conformations, it'd be nice to be able to draw these different conformations of ethane on a piece of paper without having to have a model. And so we're going to use something called a Newman projection. I'll put the model down here. And what I'm going to do is draw a Newman projection which is focused. Newman projections are always focused on one carbon-carbon bond. So he uses a dot. This particular is this dot. The far carbon further away from me is this big circle. We just made it a big circle so we can see it behind the first carbon. Now each of these carbons are bound to each other, and that takes up one of their bonds, but they're bound to 3 other things. And so for each carbon I'm going to draw 3 bonds representing the 3 other substituents attached to them. And in this case they're hydrogens. So carbon 1 is bound to carbon 2, and it's bound to 3 other hydrogens. Carbon 2 in the back is bound to carbon 1, and it's bound to 3 other things. And it's really where I put these other 3 bonds which illustrates the particular conformation we're looking at. So let's look at this model here. Okay, what I've got is what we call a staggered conformation, where each of the hydrogens are staggered from each other, as far away from each other as possible, 30 degrees from each other. And so what I can do is represent the staggered conformation on my Newman projection by putting the 3 other bonds from carbon 2 in staggered positions. Now in ethane, that second carbon, all of these 3 positions are also filled up with hydrogens. So this is a Newman projection which illustrates the particular conformation of ethane that's represented by this model, and we can name it staggered. And this is the most stable conformation of ethane. You can imagine drawing other Newman projections which represent other conformations
let's rotate that carbon-carbon bond to get sort of the opposite, where these hydrogens are lined up with each other. Okay, we call this an eclipsed conformation, and you can see why. Let's imagine this hydrogen on carbon 2 is the sun. This hydrogen that's closer to you is the moon. And when we move to a conformation where the hydrogens line up, the moon is eclipsing the sun. We've got a solar eclipse. Okay, and you might imagine this is a relatively unstable conformation of ethane because there's potential for steric hindrance with these hydrogens which are lined up. Okay, so how do I draw this eclipse conformation as a Newman projection? Well, do it the same way, basically. Here's my near carbon. Here's my far carbon, carbon number 2. My near carbon has 3 other substituents attached to it. They are still hydrogen because we're dealing with ethane. And here's where my Newman projection is going to change from the staggered. In the carbon number 2, the back carbon also has 3 hydrogens attached to it, but I'm going to draw their bonds as close to eclipsing these near hydrogens as possible, so that we can really see these hydrogens are bumping into each other. It's actually hard to draw this Newman projection. It's not a very stable Newman projection, and so this is how you would draw the eclipsed conformation. Now you might imagine there's really an infinite number of possibilities for conformations of ethane depending on what angle you have on this carbon-carbon bond, and each of these have different stabilities, but we typically think of staggered and eclipsed as the 2 extremes, the most stable, the least stable. Okay, just like I showed you here, we showed with the help of ball and stick model. Now this was about ethane, so this was the simplest example for a demonstration. Now if I want to talk about butane, let's look at butane. What is butane? This is butane. This is butane. Okay. Now if I focus on this particular bond, taking this as an example, and around this if I rotate, right? So ये carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. If I want to write this, then how will I write? अगर इसको मानते हैं फ्रंट कार्बन और इसको मानते हैं बैक कार्बन, तो ये हो जाएगा फ्रंट कार्बन, ओके, ऐसा, और बैक कार्बन ये। तो फ्रंट कार्बन में क्या क्या लगे हुए हैं? एक ये ग्रुप और 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन और एक CH3, ऐसा हो सकता है फ्रंट कार्बन, राइट। और बैक कार्बन में मैंने अगर ऐसा ले लिया, I'm taking this staggered form, then ऐसा हो जाएगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रंट कार्बन की यहाँ पे ऐसे ले ली, ये हो गया फ्रंट कार्बन, और ये हो गया बैक कार्बन की यहाँ पे ऐसा ले लूं, ऐसा ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे CH3 ले लें और यहाँ पे H। तो ऐसे कैसे अलग अलग कन्फॉर्मर्स आ सकते हैं, मतलब रोटेट करके। तो ब्यूटेन के अबाउट भी पॉसिबल है। सो व्हिच आर द मेन कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन व्हिच वी स्टडी, राइट। हम लोग ऐसे स्टडी करते हैं, जैसे ये दिखाया मैंने आपको, ये दिखाया, ऐसे अलग अलग कन्फॉर्मर्स बना सकते हैं। सो अगेन आई विल शो यू द वीडियो, उसमें वो दिखा रहा है ब्यूटेन के अलग अलग कन्फॉर्मर्स को, जैसे मैंने यहाँ पे अभी दिखाया रेड इंक से, वैसे वो बॉल एंड स्टिक मॉडल समझाएगा। जस्ट फोकस ऑन द बॉल एंड स्टिक मॉडल नाउ। सर मतलब इस वे में हम सिर्फ ऑक्टेन तक ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना? नहीं, क्यों?
रिप्रेजेंट हम लोग करते नहीं है सिलेबस में, वो अलग बात है, बट किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, यहाँ पे लगा दो कुछ भी ग्रुप, क्या फर्क पड़ेगा? Okay, sir. At a time you're taking only 2 carbon atoms, that is okay, but उस कार्बन एटम के साथ क्या लगा हुआ है, उस पूरे को एक ग्रुप G मान लो ना, पूरे ग्रुप को। जैसे यहाँ पे अगर है कुछ ऐसा टाइप का कुछ है, तो इस पूरे को एक ग्रुप G मान लो, राइट? Yes, sir. Got it. तो अभी ब्यूटेन का दिखाते हैं, देख लो ब्यूटेन का। So let's make butane. Butane has 4 carbons, each carbon saturated. Whoop. So I'm just going to replace 2 of the hydrogens on each of my carbons from ethane with methyl groups. And now I've got this big thing model. Maybe I'll back the camera up here as much as possible so it's easier to see the whole thing. Here's my butane. Okay. Now we can think about different conformations of butane just like we did with ethane, except obviously it's a little more complicated, right? We've got 4 carbons, and each of these sigma bonds of our carbons can rotate also, and that can change the overall conformation of the molecule. Now, when we look at butane, we're really going to focus on this carbon 2, carbon 3 bond, this sigma bond right here, and we're going to rotate it, and we'll see why that's illustrative. Okay, so let's look and pretend that we're looking down this carbon, and imagine rotating that carbon 3 bond to give us different conformations. Okay, and it might be difficult to see with this molecular model, but you obviously see a problem right now, right? If I try to rotate this bond, bumping in a little bit. But here, the carbon must have 3 hydrogens attached to them. They have 2 hydrogens. Model here. Here's carbon 2, has 2 hydrogens and a methyl group. So I'll just change this to CH3. And carbon 3, which would be the big circle in the back, has 2 hydrogens and a methyl group. So I'll change this hydrogen to a methyl group also. And really we've got a very eclipsed conformation that's illustrated by this Newman projection. It's very unstable. As we saw, these methyl groups that each other can have bias, this conformation of butane. Now it's so unstable, we call it we can also call it a syn conformation, SYN, because the 2 bulkiest substituents are lined up with each other. We're not just eclipsing a methyl group and a hydrogen, we're eclipsing the 2 biggest groups, a methyl group and methyl group. So that's a special type of eclipse. Then we rotate this carbon 2, carbon 3 bond, we might expect to see more stable conformations. Here's a staggered conformation where the methyl groups are not overlapping, but they're staggered from each other. Here's another eclipsed conformation where we've got a hydrogen eclipsing the methyl group behind. We can move to a different staggered conformation here, and this one we might predict to be the most stable
because not only are all the substituents staggered from each other, not eclipsed, the two bulkiest ones, the methyl group here and the methyl group from carbon 3, are on opposite sides of the molecule. And so if we were to draw this conformation in a Newman projection, what we would say is, well, it's a staggered conformation where the methyl groups are on opposite sides of the molecule. And for something like butane, we can say, well, not only is this staggered, it's a special type of staggered conformation that we call an anti, because the two bulkiest substituents are on opposite sides of the molecule. Okay. There's one more name that we need to learn about the conformations of butane, and that's another special type of staggered conformation. It's really a staggered conformation where the methyl groups are staggered from each other, but are not on opposite sides. So here's a representation of that Newman projection, where we have a staggered conformation. We have a methyl group here, and everything else is hydrogens. This you would predict would be more stable than the syn eclipsed conformation, but maybe less stable than the staggered anti. This is a type of staggered conformation because all the substituents are staggered from each other, but we also call it a gauche conformation. Really, it's a staggered conformation that's not anti, it's gauche. Okay, so I'll explain that. Look at this. This is fully eclipsed, like you showed. Fully eclipsed, also called syn. What is the meaning of fully eclipsed? Fully eclipsed का मतलब होता है कि जो दो bulky groups है, in this case both are CH3, वो lined up है. These both are in the same direction. That is why we say that dihedral angle is 0 degree. Dihedral angle is 0 degree का मतलब क्या है? दोनों के दोनों जो मिथाइल ग्रुप्स है, यानी CH3 ग्रुप्स है, वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं. तो इसके पीछे ये, लेकिन डायरेक्शन तो वही है ना, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा. तो देयर इज 0 डिग्री एंगल बिटवीन देम. तो इसको बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड और सिन. सो बोथ द बल्की ग्रुप्स आर लाइंड अप. ओके, लाइंड अप टुगेदर, वन नेक्स्ट टू द अदर. इसको बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड. इसको बोलते हैं गॉश. व्हाट इज गॉश? गॉश इज अ स्टैगर्ड फॉर्म where dihedral angle is 60 degrees. अब देखो दो मिथाइल ग्रुप्स के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्रीज है. इसको बोलते हैं गॉश. है तो स्टैगर्ड, लेकिन स्टैगर्ड के अंदर ही स्पेशल केस एक है जहां पे एंगल अगर 60 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं गॉश, जो उसने लास्ट में बना के दिखाया था. और एक तरीका हो सकता है ये भी एक्लिप्स्ड है, बट ये पार्शियली एक्लिप्स्ड कहलाएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियली एक्लिप्स्ड? कंपेयर थर्ड एंड फर्स्ट. यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स लाइंड अप थे एक दूसरे के नेक्स्ट टू, और यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे CH3 के पीछे हाइड्रोजन है और यहाँ पे दूसरा CH3 है. तो इसके लिए इसको बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स्ड. पार्शियली एक्लिप्स का मतलब क्या है? जो सबसे बड़े दो ग्रुप्स है वो एक दूसरे के पीछे नहीं है, एक बड़ा ग्रुप और दूसरा कोई और ग्रुप. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस पार्शियली एक्लिप्स्ड. तो थर्ड और फर्स्ट के बीच में कंपेयर करोगे तो फर्स्ट इज फुल्ली एक्लिप्स्ड एंड थर्ड इज पार्शियली एक्लिप्स्ड. व्हाई फर्स्ट इज फुल्ली एक्लिप्स्ड? बिकॉज फर्स्ट में दोनों के दोनों CH3 ग्रुप्स लाइंड अप है एक दूसरे के नेक्स्ट टू. थर्ड में CH3 एंड H आर लाइंड अप नेक्स्ट टू ईच अदर. तो थर्ड वाला इज पार्शियली एक्लिप्स्ड. फोर्थ वाला ये स्टैगर्ड है, लेकिन स्टैगर्ड का स्पेशल केस है जहां पे दो बल्कि ग्रुप्स के बीच का जो एंगल है this is equal to 180 degrees. So when the dihedral angle is 180 degrees, we say that this is a special case of staggered conformer, which is called anti-conformer. तो हम लोग ये चार conformers ब्यूटेन के देखते हैं. कौन से चार? फर्स्ट वन इज फुल्ली एक्लिप्स्ड और सिन भी बोलते हैं इसको. नेक्स्ट वन इज गॉश. दिस इज नथिंग बट स्टैगर्ड ओनली,
बट स्टैगर्ड के अंदर ही एक टाइप है ये, बिकॉज एंगल इज 60 डिग्री बिटवीन दिस टू। ये है पार्शियली एक्लिप्स्ड, यहाँ पे दोनों CH3 के बीच का एंगल इज 120 डिग्री, और ये है staggered, लेकिन a special case of staggered where the dihedral angle is 180 degrees and hence it is called anti। anti का मतलब क्या है? Dihedral angle should be 180 degrees। दो बल्कि ग्रुप के बीच का जो एंगल है that is 180 degrees, तो ये हो जाएगा एंटी। तो एंटी भी staggered है, गॉश भी staggered है, ओके। बट अरेंजमेंट अलग है, इसके लिए एक को बोलते हैं हम लोग गॉश और दूसरे को बोल रहे हैं एंटी। फाइन, एनी डाउट?